Hello everyone, welcome again to our social science class. Dear students, I hope that you all are just doing your studies well and preparing for your coming examinations. Dear students, in last class we have discussed about some important aspects, factors, dimensions that have created the conditions for the rise of Hitler to the power. While discussing the reasons behind the rise of Hitler, we have gone through a number of reasons. The foremost important reason was the impact of First World War on Germany in the context of the Treaty of Versailles. And we have also seen it was the Treaty of Versailles due to which German economy had been ruined. We have also seen this Treaty of Versailles had created social turmoil as well as with the failure of the Weimar Republic, there was a political vacuum. In that particular background, when everywhere people were very much disappointed, they were just facing a very acute economic crisis, and it was reflected into their day-to-day life. They were seeing their children were sleeping without food, hyperinflation, unemployment. These were the scenarios that was faced by the newly elected Weimar Republic, and the Weimar Republic failed to stand on the hopes of the Germans, and ultimately there was an atmosphere in which Germans were very much unhappy with this elephant democratic regime known as the Weimar Republic. They were very much disappointed with this experiment of democracy in Germany, since there was political instability. So now they were thinking about a strong government that could take Germany out of this crisis. And in that particular situation, in that particular atmosphere, it was Hitler, it was Nazis who presented themselves as a savior of German economy, savior of Germans, and they ultimately just became they came into the power, and Hitler became the chancellor, and then after he became the dictator. In today's class, we are going to investigate how this had happened, how Nazis propaganda, how Hitler personality played an important role in that country, in that events. So let's begin the discussion. Hitler's policies. At first, we are going to discuss about destruction of democracy. Remember, Nazism neither supports democracy nor monarchy. Nazism also not supporting socialism too. Nazism also not supporting capitalism too. So actually Nazism is very much different from all those contemporary ideologies, contemporary practices. Because Nazism evolved in such an environment in which the Germans were suffered by all such ideologies. For example, in the First World War, England, France, USA were representing capitalism. They were representing capitalist nations. So they were having an aggression
against the capitalism. They had seen the Weimar Republic had failed, so they were very much unhappy with the democracy. And they were also blaming the German emperor for the defeat of Germany in the First World War. So they were not very much convinced with such kind of ideology. One thing was there. They were not knowing very much about the socialism, because socialism had just grew in 1917 with the Russian Revolution in Russia. But in practice, they were not very much convinced with the idea of socialism. So now Hitler was trying to introduce his own ideologies that was known as Nazism. Let's begin the discussion. The crisis in the German economy, polity and society formed the background to Hitler's rise to power. This crisis in the German economy, polity and society, it all is due to the First World War. First World War. It was the very important factor that was working in the background of such crisis. Now, Hitler, born in 1889 in Austria, Hitler spent his youth in poverty. He belongs to a very poor family, so he spent his youth in poverty. When First World War had broke out, then Hitler joined the German army. At first, he had given the duty to just carry the message from one front to another. Thereafter, he had promoted as a corporal, and during the war, he showed great bravery, and due to that, he had given or awarded a number of medals, and he became very much popular in Germany for his bravery. But Germany defeated the First World War. As you know that Germany had been defeated by the Vice power. Horrified him. Once the news of German defeat reached to Hitler, he became very much horrified. He became very much sad. And the Versailles Treaty, or Treaty of Versailles, made him furious. And once he came to know about the Treaty of Versailles, he became so unhappy. And since then, Hitler was just looking for an opportunity to overthrow such humiliating treaty. Next, in 1919, देखिए जर्मनी की हार, हिटलर उससे काफी दुखी, उससे नाराज, उससे निराश. He joined a small group, एक छोटी पार्टी ज्वाइन करता है जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी. इस पार्टी को हिटलर ने ज्वाइन किया. इस पार्टी की कुछ आइडियोलॉजीज बहुत हद तक आप कह सकते हो एक इस प्रकार की थी जो एक रिफॉर्मेटिव, जर्मनी को इस क्राइसिस से बाहर निकालने की बात करने वाली पार्टी के रूप में, ट्रीटी ऑफ वर्साइल को स्वीकार नहीं करने वाली पार्टी के रूप में थी. वेरी सून हिटलर took over the organization. हिटलर इस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बन जाता है और रीनेम, इसका नाम बदल करके इसने किया द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी. बच्चों यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 मार्क का, कि हिटलर फॉर्म विच पार्टी. तो आप नाम देंगे द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी. और विच पार्टी वाज रीनेम्ड बाय हिटलर, तो जर्मन वर्कर्स पार्टी. ये दोनों में से कोई एक नंबर के लिए पूछा जा सकता है. और यही द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कम टू नोन एज नाजी पार्टी. मतलब 1919 ऑनवर्ड ये नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी एग्जिस्ट करना शुरू करती है और हिटलर अपनी आइडियोलॉजीज के साथ, अपनी आइडियाज के साथ लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करना शुरू करता है. ध्यान दीजिएगा, बैकग्राउंड है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सिचुएशन है क्राइसिस इन द जर्मन इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी. यानी पूरी जर्मनी में अस्त व्यस्तता है, पॉलिटिकल वैक्यूम है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, सोशल ट्रिब्यूनल है.
और वाइमर रिपब्लिक की फेल्योर लोगों के डिसैटिस्फैक्शन को बढ़ाती हुई है। उस पीरियड में हिटलर वाज जस्ट इंट्रोड्यूस हिज आइडियोलॉजीज एंड ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज अ मसीहा। वो बड़ी बड़ी रैलियों को ऑर्गेनाइज करता था और खुद को बार बार ये साबित करता था कि ये नाजी पार्टी और ये हिटलर ही ऐसा व्यक्ति है जो जर्मनी को इस प्रकार की दुखदाई स्थिति से बाहर निकाल सकता है। एक विकल्प के रूप में खुद को पेश करने लगा और वो बार बार इस बात पे जोर देता था, लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट करता था, अपनी आइडियाज रखता था। देखिए, जब पेट में आग लगी हो और सर पे छत नहीं हो, पॉकेट में पैसे नहीं हो, बच्चे भूख से बिलबिला रहे हो और उस समय की सरकारें मूक दर्शक बन जाए, तो व्यक्ति निश्चित रूप से विकल्प की तलाश करता है। उसके अंदर ये बुद्धि खत्म हो जाती है, ये सोच, ये विवेक समाप्त हो जाती है कि वास्तव में ये जो आइडियोलॉजी है वो भविष्य के लिए कितनी गंभीर और खतरनाक हो सकती है। तात्कालिक लाभ चाहिए, व्यक्ति अपमान से ग्रसित है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल की ह्यूमिलिएशन, उससे पूरी जर्मन पॉपुलेशन सफर्ड है। तो इस परिस्थिति में हिटलर has introduced his own way of propaganda, his own style of introducing himself, and gradually this the National Socialist German Workers Party popular हुई। But again there is a problem। देखिए, ये जो सिचुएशन है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ट्रीटी ऑफ वर्साइल, आपने देखा कि क्राइसिस तो है, लेकिन आपने ये भी देखा कि it was the period when USA had bailed out, USA had provided bailed out package, means US loaned Germany in accordance with the Davos plan 1923 onward। तो जर्मन की इकोनॉमी कुछ हद तक सुधरने की स्थिति में स्टेबिलिटी की ओर जा रही थी। लगा कि कुछ चीजें सुधर सकती है, बट आपको याद होगा in 1929 itself American economy was collapsed with the collapse of the American share market। और 1929 onward, now USA has refused to grant any loan to Germany and as well as the other European countries। इसने सिचुएशन को और गंभीर कर दिया। अब इसका प्रभाव देखिए 1930 के शुरुआती महीनों तक नाजी पार्टी बहुत पॉपुलर नहीं हो पाई। आप आश्चर्य करेंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 1928 के इलेक्शंस में, जर्मन इलेक्शंस हुआ, ठीक है, जर्मनी में इलेक्शंस होते हैं और इस इलेक्शन में जर्मन वर्कर्स पार्टी को, जिसको नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कहते हैं, केवल 2.8% वोट्स मिले। इमेजिन कीजिए, केवल 2.8% वोट मिले। लेकिन यहाँ विद द ग्रेट डिप्रेशन, यानी इकोनॉमिक डिप्रेशन की बात कर रहा हूँ, कोलैप्स ऑफ द अमेरिकन इकोनॉमी, तो विद द ग्रेट डिप्रेशन द नाजिज्म बिकेम अ मास मूवमेंट। अब नाजिज्म को बहुत सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि एक्यूट सिचुएशन हो गई है जर्मनी की फाइनेंसिंग कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है, इकोनॉमी पूरी की पूरी बर्बाद हो चुकी है, लोग अब भूख से बिलबिला रहे हैं, बच्चे भूख के मारे छटपटा रहे हैं, लोग गले में तख्तियां लेकर के रेडी टू एनी वर्क घूम रहे हैं, जाड़े की सर्द रातों को वो खुले में बिताने पे मजबूर है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है कि वो मकान किराए पे ले सके। अनएम्प्लॉयमेंट बड़े पैमाने पे है। तो इसके साथ ही अब नाजिज्म के प्रति लोगों का अट्रैक्शन बढ़ा। क्यों? वाइमर रिपब्लिक फेल कर रही है और यहाँ पे नाजिज्म खुद को एक विकल्प के रूप में पेश कर रही है। अब निराशा गंभीर हो चुकी है। उस निराशा में डूबते को तिनके का सहारा, उस अंधकार में नाजिज्म और हिटलर एक दीपक के रूप में लोगों को समझ में आ रहे हैं। अब देखिए परिणाम क्या होगा। इस पीरियड में नाजी प्रोपेगेंडा यानी नाजियों का प्रचार, खुद को एक रिफॉर्मर के रूप में, खुद को एक सेवियर के रूप में प्रेजेंट करना, वो यहाँ सामने आता है। और यू विल बी सरप्राइज कि 1932 में इलेक्शन है फिर से, क्योंकि आपने देखा कि वाइमर रिपब्लिक बहुत फ्रेजाइल थी, बार बार ये गवर्नमेंट आ रही थी जा रही थी। 14 सालों के अंदर में 20 कैबिनेट, जिसकी एवरेज ईयर
केवल वर्किंग पीरियड 209 डेज थी। तो उस इनस्टेबिलिटी में फिर से इलेक्शंस होते हैं 1932 में, और इस बार के इलेक्शन में नाजी पार्टी वन 32% ऑफ वोट्स और इमर्ज एज अ लार्जेस्ट पार्टी इन द जर्मन पार्लियामेंट। अब ये जर्मन पार्लियामेंट की सबसे बड़ी पार्टी आ गई, 37%, नॉट 37%। देखिए 1928 के इलेक्शन में 2.8% ऑफ वोट, 2.8, और अगले कुछ सालों के अंदर यही पार्टी 37% वोट लेके सामने आती है और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है पार्लियामेंट में। इट इज नॉट सरप्राइज, देयर इज अ रीजन, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। इन दैट acute situation, now Nazism emerged as a popular ideology and it became mass movement. अब क्या हुआ, लार्जेस्ट पार्टी होगी पार्लियामेंट में। Now there is no other way, rather President Hindenburg on that time, the Weimar Republic was functioning and there was a republican form of government, so there was a president. So on that time the president was Hindenburg. He invited Hitler to took the position of chancellorship. You may call it is a kind of prime minister. Now Nazi came into power, Hitler became the chancellor of जर्मनी, और इसी के बाद अब हिटलर की पॉलिसी शुरू होगी कैसे वो डेमोक्रेसी को डिस्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि डेमोक्रेसी को बर्बाद करेगा, वाइमर रिपब्लिक को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देगा, और प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग को भी मजबूर करेगा रिजाइन करने के लिए और खुद को डिक्टेटर के रूप में डिक्लेयर करेगा। दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट विल बी डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ हिटलर केम टू पावर, अब तो नाजी आ गए पावर में। अब देखिए आगे की उसकी पॉलिसी क्या होगी। यहाँ पर फिर से मैं आपको कहूंगा, इससे आप निश्चित नोट कर लें, क्योंकि इसके बाद पुनः एक नई टॉपिक की हम लोग शुरुआत करेंगे।